Hey friends, what's going on? Hi, this is Saad back again with another video. और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले Everything is Effed by Mark Manson, which is again an amazing book. मैंने इस साल 2022 में ये बुक पढ़ा and yeah, this book released somewhere between 2019 and 20. But then I knew about this book because I've read the first book of the author, which was The Subtle Art of Not Giving a F, which is also a very good book. And if you have not read that book, then you can check 3 lessons from that book as well. So if you are someone who is in your 20s and 30s who doesn't like to read very much or is not very much into reading and would love to read about a subject which can interest anybody in this world, then definitely you should read this book, because this book talks about life, philosophy, psychology, the human brain, the human emotions, you name it. This book talks about like everything that a human will care about on this planet. So without wasting any time, let's start the 3 lessons from this book. The first lesson of this book is that your feelings is your control. Let's just say कि आपका brain एक गाड़ी है, एक कार है. So जिसमें 2 लोग बैठे हैं. One is your thinking brain and the other one is your feeling brain, जो आपके इमोशंस हैं. The thinking brain obviously your rational self, जो आप डिसीजंस लेते हैं, जो आपका लॉजिकल इंसान होता है ना, आपका वो है वो थिंकिंग ब्रेन. सो नॉर्मली व्हाट डू वी थिंक? नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि हमारा थिंकिंग ब्रेन is the controller who is driving the car, and our feeling brain is just someone who is sitting beside the thinking brain and just nagging around like a kid कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो खाना है या मुझे वहाँ जाना है या ये कपड़े लेने हैं, right? And our thinking brain is the one who is always in control with discipline, and जो हमेशा ये बोलता है कि नहीं, आज हमें जिम जाना चाहिए, या आज हमें इस समय पढ़ाई करना चाहिए, या आज हमें अपने उस जो हमारा सपना है, जो हमारा ड्रीम है, उस पर वर्क करना चाहिए. नॉर्मली ज़्यादातर लोग इस दुनिया में यही जानते थे that our thinking brain is the controller of the brain and our feeling brain is just something that affects the brain but is not the controller. But काफ़ी टाइम पहले जब ह्यूमन ब्रेन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो इलियट नाम के एक बंदे को एक हेड इंजरी हुई थी. हेड इंजरी के बाद नॉर्मली उसके साथ सब कुछ नॉर्मल जैसा था. उसे बस चोट लगी सर पे एंड वो फिर डॉक्टर के पास गया एंड फिर सारी चीज़ें नॉर्मल थी, उसकी चोट भी ठीक हो गई. बट हेड इंजरी के बाद एक चीज़ ये हुई कि वो पहले की तरह नॉर्मल इलियट नहीं रहा. वो उसकी फीलिंग ब्रेन मर चुकी थी एंड वो सिर्फ एक लॉजिकल ह्यूमन बीइंग था. तो आपको सुनने में ये लग रहा हो कि अरे यार, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है कि फीलिंग ब्रेन डेड हो गई एंड थिंकिंग ब्रेन एक्टिव है. इसका मतलब ये कि उसे अब लेट नाइट आइसक्रीम की क्रेविंग नहीं होगी, वो अपनी डाइट को फॉलो कर सकेगा, या वो जब चाहे अपना जो गोल बनाए वो पूरा कर सकता है. उसे प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा बिकॉज उसकी फीलिंग ब्रेन डेड है, राइट? बट एक्चुअली ये हुआ कि जब उसकी फीलिंग ब्रेन डेड हो गई तो उसकी सारी डिज़ायर्स डेड हो गई. वो अपने आप को मेंटेन करना भूल गया, वो अपने बच्चों का ख्याल रखना भूल गया, वो अपने फैमिली का ख्याल रखना भूल गया, वो अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करना भूल गया, बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, because his feeling brain was what made him feel attracted towards certain things. Now when his feeling brain is dead, he is not attracted towards a financially stable life, he is not attracted towards a healthy looking body, he is not attracted towards a healthy family relationship. Everything is meaningless to him. उसके लिए ऑफिस का वर्क करना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना was same. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना या अपने घर में फर्नीचर्स को रिपेयर करना was same. He did not know which was better because his feeling brain was dead. He could not measure things. That is when doctors came to know that our feeling brain is the control of the brain. So मेरी तरह अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारी thinking brain is the control of the brain, अगर हमारी feeling brain को हम जितना सप्रेस कर पाए उतना हम अपनी thinking brain को यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ में ज़्यादा कंट्रोल पाएंगे, then that is a wrong perception. Our feeling brain is the one who creates desires, who makes us feel attracted towards a fit looking body, or towards a financially stable life that we want to have, or towards the business that we want to start. Our feeling brain is the one who makes us like those things, which eventually creates action in our thinking brain, which eventually makes us want to do that thing, and eventually and then we end up doing those things, right? You get it? The second lesson of this book is the Newton's law of emotion. Basically Newton's की law को थोड़ा तोड़ मरोड़ के यहाँ पे मार्क मैनसन ने एक न्यूटन्स लॉ ऑफ इमोशन बनाया, which is also very interesting. First law is that every action requires an equal and opposite emotional reaction. जैसे मैंने आपको एक पंच किया
एंड आप बोलोगे एंड आपको गुस्सा आएगा, आप या तो मुझे वापस पंच करने की सोचोगे, या तो मुझे गालियाँ देने की सोचोगे, या तो मुझे उससे भी ज़्यादा कुछ करने की सोचोगे, मेरे को किसी और बड़ी चीज़ में फंसा के मेरे से बदला लेने का सोचोगे। बिकॉज मेरे इस बुरे एक्शन से आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आ गई टूवर्ड्स मी, विच वॉन्ट्स मी टू फील इक्वली बैड और इवन मोर बैड अबाउट what I've done to you. Similarly, अगर मैं आपको एक गिफ्ट दूँ तो भी एक इमोशनल गैप बनेगा। आप भी चाहोगे कि आप भी मुझे एक गिफ्ट दो, क्योंकि मैंने आपको जितना अच्छा फील कराया है आप भी मुझे उतना अच्छा फील कराओ, सो दैट वी कैन नॉर्मलाइज और इक्वलाइज दैट इमोशनल गैप। ये इमोशनल गैप हमेशा हर समय हम बैलेंस करते रहते हैं अपने हर रिलेशनशिप्स में। द सेकेंड इज आवर सेल्फ वर्थ equals the sum of our emotions over time, which basically means that जब भी हमारे साथ कोई इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है या इमोशनल गैप क्रिएट होता है कि किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मुझे भी उसके साथ अच्छा करना है, या किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे भी उसके साथ बुरा करना है, जब भी ये हम मीट नहीं कर पाते तो एक इमोशनल गैप बन जाता है, जो अगर काफ़ी टाइम तक पूरा नहीं होता है तो हम उसे अपना कैरेक्टर का एक पार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकल लीडर ने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया एंड इफ वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, देन वी जस्ट थिंक दैट मे बी वी डिजर्व्ड इट, और वी विल टेल आवरसेल्फ सम स्टोरी अबाउट इट व्हिच विल मेक अस फील दैट व्हाटएवर हैपेंड वाज मेंट टू हैपन एंड इट इज समथिंग वी डिजर्व्ड। सिमिलरली, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा कर दिया और हम उसे इक्वलाइज नहीं कर सकते, वी विल थिंक ऑफ इट एज समथिंग व्हिच जस्ट was meant to happen to us, or something that we deserved. The third is your identity will stay your identity until a new emotion or experience acts against it. So we are all born with a set of values and beliefs, right? And हमारी जो set of values होती है ना, जो भी हमें मिलती हैं, जो भी हम अडाप्ट करते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज वो हम काफ़ी साल से कैरी ऑन कर रहे होते हैं। और इसलिए आप नोटिस करोगे कि जब भी कोई किसी इंसान के ओपिनियन के अगेंस्ट या वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई कुछ हो रहा होगा, सो इंसान बहुत अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर हो जाता है, राइट? बिकॉज वी डोंट वांट टू चैलेंज आवर वैल्यूज़, एंड अगेन व्हेन आवर वैल्यूज़ आर चैलेंज्ड एंड चेंज्ड, we face a lot of discomfort. Sometimes these discomfort are good for us, because if we were having bad values and these bad values have changed and become good values, then that's good for us. But sometimes it's not the case. Sometimes our good values, because of some bad situations, turn into a bad value. For example, you're a believer of the fact that you should always be kind to people and you just should be generously be kind to people. बट अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन को फेस करते हो कि जिन लोगों के साथ आप काइंड थे वो लोग आपके साथ ब्रूटली रूड है या आपको हेट करते हैं, then your value will be challenged and then you will stop being kind to everyone else and you just be a badass. The third lesson of this book is the blue dot effect, which basically says that the better things get, the more problems we find in those things and in whatever scenario we are in. आज की डेट में in 2022 humans are best in healthcare. So शुरुआत से लेकर अब तक हेल्थ केयर में हम बहुत आगे आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम पहले से ज़्यादा एनवायरनमेंट का केयर करने लगे, इवन तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट स्टिल वी हैव स्टार्टेड टू केयर मोर अबाउट द एनवायरनमेंट, राइट? अर्लियर हमें पता भी होता था और पॉपुलेशन कम थी तो डिस्ट्रक्शन भी कम होता था। सो वी हैव स्टार्टेड टू केयर मोर अबाउट people, we started to care more about the environment, but still there are more problems in the society today than ever before. You know why that is? It's because of the blue dot effect. जितनी कम problems हमारी लाइफ में होंगी उतना ही ज़्यादा heavy burden हमें उन problems का लगेगा जो actually हमारी लाइफ में है. That's why you will always find some of the most successful or rich people commit suicide or do terrible things, because they cannot tolerate the few bad things that they still have in their life even after they becoming so rich and powerful. So these were the 3 lessons from the book Everything is Effed. I'm not going to use that slang because it's inappropriate. Anyways, thank you for watching this video, guys. I'd love it if you press a like button, share it with your friends and family members, and also subscribe to the channel if you have not already. That's all for this video, guys. I'll see you in my next week's video. Till then, goodbye and have a nice day. Damn.